Assalamu alaikum and welcome back to the channel. Sayyid Fazil Bukhari. I am Bisma and this week's topic is Geo-Economics. We'll be discussing the origin of the term Geo-Economics, its relationship with geopolitics, and why is Pakistan shifting towards Geo-Economics. The term Geo-Economics is not an entirely new term. Some of you might be familiar with it. However, it lacks a concrete definition today. The origin of the term goes back to the Cold War times. It's a post-Cold War term. इसका मतलब ये है कि after the Cold War, scientists evaluated the geopolitics and the international relations. And in 1993, Samuel Huntington, who is a well-known American scientist, wrote in one of his articles that since the world is a global village and economic interdependence is increasing more than ever, it would be difficult to strengthen both a state's military as well as economy. Therefore, he predicted that importance of military power is giving way to the economic power. It simply means that states which are located far away geographically from each other, such as USA and China, how are they going to compete and show their power in the global arena? अगर borders मिले हुए हैं geographically, two states are located together on the map, like Pakistan and India, तो फिर states can fight against each other in a war and decide on the basis of military might कि कौन किससे ज़्यादा powerful है. लेकिन वो states जिनकी rivalry भी है, लेकिन वो geographically बहुत दूर दूर located हैं, like the European Union, like China, like USA, तो इनका जो power show है वो Geo-Economics के through showcase होता है. Basically, Geo-Economics is the shift from military might towards economic might. जैसे अब Samsung है, Apple है, Huawei है, तो किसकी फोन कंपनी ज्यादा पैसा कमा रही है इन द ग्लोबल मार्केट, तो ये जियो इकोनॉमिक्स के थ्रू डिसाइड होगा. जियो इकोनॉमिक्स इस राइवलरी का मतलब है. जियो इकोनॉमिक्स में आप सिर्फ मिलिट्री बेसिस या गैरिजन्स को स्ट्रेंथन नहीं करते, इसमें आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करते हैं एंड यू कम्पीट थ्रू वेरियस अदर मोड्स अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री मेथड्स. इसमें आपके पास टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड एंड एनर्जी आ जाता है. जैसे geographically Russia is larger than USA, but when Russia invaded Ukraine, तो USA and European Union ने मिलके रशिया पे इतने इकोनॉमिक सैंक्शंस डाल दिए थे जिनकी वजह से उनकी इकोनॉमी क्रिपल हो गई थी और वो इकोनॉमिकली वनरेबल हो गई थी. Another example is the COVID-19. उसमें हर कंट्री ने अपनी वैक्सीन निकाली थी, ऑस्ट्रेलिया ने भी, चाइनीज ने भी एंड अमेरिका ने भी फाइजर बनाई थी. तो ये भी एक टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन था कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इतने अच्छे साइंटिस्ट मौजूद हैं कि हमारी स्टेट ने साइनोवैक और फाइजर बनाई है और कोई भी स्टेट इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं प्रोड्यूस कर सकी एज फास्ट एज चाइना एंड यूएसए. So today this has become a race that could only be won by competing through technology, infrastructure, trade and energy. Geopolitics basically is the struggle over the control of geographical entities with an international and global dimension and the use of such geographical entities for political advantage. As you can see this Venn diagram, economics, international relations and political science and geography. इन तीनों entities को जब हम मिलाते हैं, then we come up with Geo-Economics. Geo-Economics का मतलब है कि आप किस तरह अपनी कंट्री के रिसोर्सेस को यूज करके अपनी कंट्री की करेंसी एंड ओवरऑल वर्थ को इंक्रीज कर रहे हो इन द ग्लोबल मार्केट. फॉर एग्जांपल द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, उनका मेन रिसोर्स है ऑयल. सिमिलरली यूएसए, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन का जो मेजर रिसोर्स है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड. जब आपकी स्टेट इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग होती है, इट्स ऑब्वियस कि आपने अपनी मिलिट्री और अपने बॉर्डर्स की भी सिक्योरिटी उतनी ही स्ट्रांग की होगी बिकॉज आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है. ये सब चीजों से इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड आपका इतना पावरफुल हो रहा है, तो इससे आपकी करेंसी को फायदा होगा. योर स्टेट विल बी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड. आपके पासपोर्ट का, आपकी कंट्री के पासपोर्ट इतने स्ट्रांग होंगे, यू कैन ट्रैवल विदाउट वीजा. अनलाइक पाकिस्तान, हमारी कंट्री इतनी इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है. There are many countries around the world who are using geo-economic strategy to boost their economy and promote national interest. UAE and Singapore are significant examples. उसके अलावा US and UK
टिपिकल एग्जाम्पल ये है कि सैमसंग, हवावे एंड एप्पल आर लीडिंग द ग्लोबल मार्केट ऑफ फोन कंपनी. तो ये तीनों नेशंस आपकी इकोनॉमी में स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर. Now, why is Pakistan shifting towards geo-economics? Pakistan is internationally viewed as a country with a weak economy, with hostile neighbors on its eastern and western fronts. हमारे hostile neighbors हैं India and Afghanistan. और पाकिस्तान since its inception in 1947 has been a weak state and हमारे borders के इशू इतने रहे हैं कि हमने अपनी foreign policy को हमेशा डिफेंस ओरिएंटेड रखा है और अपने बॉर्डर्स को और टेरिटरी को सिक्योर करने में मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी हमने यूटिलाइज की है. तो अभी रिसेंटली लीडर्स आर ट्राइंग टू चेंज द विजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टुवर्ड्स जियो-इकोनॉमिक्स बिकॉज द वर्ल्ड इज नाउ रनिंग ऑन जियो-इकोनॉमिक्स. और इसका फायदा पाकिस्तान को क्यों होगा? एज आई मेंशन्ड बिफोर दैट एवरी कंट्री शुड बी यूजिंग देयर रिसोर्स टू boost their economy and to steer their national interest. तो पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है कि वो यूज कर सकता है and utilize it in the geo-economic era? पाकिस्तान के पास है geostrategic location. पाकिस्तान की जो location है that's very significant. It is like a connectivity hub between Asia and Eurasia. Along with that, region is rich in energy, young enthusiastic human resource and reasonably industrialized. Although पाकिस्तान को बहुत देर लगी है ये बात रियलाइज करने में कि उनको जियोपॉलिटिक्स से शिफ्ट होके जियो-इकोनॉमिक्स की तरफ आ जाना चाहिए, ग्लोबल जो परसेप्शन एक इमेज बनी हुई है पाकिस्तान की वो यही है कि एक वीक इकोनॉमी है और डिविजिव पॉलिटिक्स हैं. So now the leaders want to shift that perception internationally and make them realize कि now Pakistan is shifting towards geo-economics और we are now open to foreign direct investments. and जैसे अब recently गवादर को जो है वो ताजिकिस्तान के लिए open कर दिया है. So that is a good thing to do. Pakistan should be engaging with other countries and should focus on boosting their economy instead of just strengthening their military bases and garrisons. These are some excerpts. Geo-economics, wars are being fought on economic terms. Powerful economy is a powerful country. That's it for today. I'll attach a link of a relevant article in the comment section for you to have a deeper insight of this topic. See you again next week. Take care. Allah Hafiz.